Hello dear students, myself Mrs. Charu Kohli, your economics teacher. Today we are taking second chapter or second unit of microeconomics, that is theory of consumers behavior. In this, today we are going to cover the topic concept of demand. Now as you all know, we have two market forces prevailing in the market. They are the demand force and the supply force. Demand is the most important market force which prevails in the economy. To understand the concept of demand, we have to start and we have to understand the meaning of the three words which are written here and which are very important in relation to demand, as we use them in our day-to-day lives and we are using it taking the same meaning. But the meaning of these three terms is different, and the three terms are desire, want and the demand. Now first of all we will discuss about desire. What is desire? Desire is a feeling of a person. Whatever we feel, whatever comes in our mind in relation to the things which we are purchasing, which things which we want to satisfy our needs, they are desires. Means whatever the feeling I have for a product, for an item or anything which I want in my life, that is a desire. So what I will write here, desire is a feeling of a person. Suppose I feel that I want a car. I want a car. Second, if I feel I want a dress. I want a book to study. I want to fly. I want to visit moon every day. Or if I say I want a tree which should be on my house in my veranda and that should give me money every day. So what are these? These are my feelings. And ultimately we can say these are my desires. So anything which comes in our mind related to what I want, that is a desire. Now among all these desires, everything which is coming in my mind is a desire. Some desires can be fulfilled and some desires cannot be fulfilled. Cannot be fulfilled. Such as, if I say I want a car, I want a dress, I want a book. These are the desires which can be fulfilled. If I have money, I'll go to the market, I'll buy and purchase these things and I will fulfill my desire. मेरी need पूरी हो जाएगी. But if I say I want a tree which should be in my veranda and which should give me money every day, is that possible? No, it is not possible. If I say I want to visit moon every day, is that possible? No, that is not possible. So there are some desires which cannot be fulfilled. So when we say that desires can be fulfilled and desires cannot be fulfilled, among them the desires which can be fulfilled, that becomes want. That becomes an effective desire. वो क्या बन जाती है? जो चीज पूरी हो जाती है, जो डिजायर पूरी हो सकती है, वो डिजायर एक इफेक्टिव डिजायर बन जाती है और अल्टीमेटली वो एक वांट में कन्वर्ट हो जाती है. वो एक वांट में कन्वर्ट हो जाती है. तो अब किसी भी चीज को वांट कहने के लिए वी नीड थ्री थिंग्स. मतलब किसी भी चीज को अगर हम वांट कहेंगे तो थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. The first is the desire itself. That is an effective desire. First thing,
I'm taking the example, I'm taking one of the example of this fulfilled desire, that is I want to buy a car. So, this desire can be fulfilled? Yes, it can be fulfilled. So, it will be converted to want. And for anything to be want, there are three things important. First, it should be an effective desire. So, to have a car, I want a car, when I say, so it is an effective desire? Yes, it is an effective desire. The second thing to be a want will be ability to pay. That is ability to pay. Means when I want a car and suppose the car is costing rupees 5 lakh rupees. I have 5 lakh rupees? Yes, I have 5 lakh rupees. If I am not going to have 5 lakh rupees, then my desire will be a desire only, it will not become a want. For a want, we should have the ability to pay. Means if my car is costing rupees 5 lakhs, so I should have 5 lakh rupees in my pocket so that I can buy that car. I can fulfill my desire to become a want. Fine. तो हम मान के चलेंगे कि यस हमारे पास एबिलिटी है, हमारे पास 5 लाख रुपए हैं और उस 5 लाख रुपए से हम कार खरीद सकते हैं. तो सेकेंड थिंग इज फुलफिल्ड. And the third thing to be a want is willingness. Willingness to buy. What do you mean by willingness? Willingness होती है अंदर की इच्छा. पैसे होने से भी कुछ नहीं होता. If I go to that shop vendor and the person will tell me कि the car is of 5 lakh rupees and I will say yes I have 5 lakh rupees, I want to buy this car, but the time I am making the payment for the car I am hesitating. I am not willing to pay 5 lakh rupees for that product. Means my desire or my want is not completely, I am in a mood to fulfill my desire. So at that situation, will I be able to buy that car? No. So to buy a particular product, we want willingness also. Ki I have the money, I am willing to buy that, then only my desire will become a want. Fine. तो हम मान के चल रहे हैं yes. Our desire for a car is an effective desire. We have the ability to pay 5 lakh rupees for the car and we are also willing to pay 5 lakh rupees for the car. Three things we are ready to do. Then this desire of buying a car has converted to want. अब ये क्या बन गई हमारी? Want. Fine. And जब ये तीनों चीजें पूरी हो जाएंगी तो ये चीज कन्वर्ट हो जाएगी डिमांड में. किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? डिमांड में. अब किसी भी चीज को डिमांड होने के लिए वी वांट 5 थिंग्स. वी वांट 5 थिंग्स. 5 मीन्स ABCDE. फर्स्ट इज किसी भी चीज को डिमांड कहने के लिए इट शुड हैव अ इफेक्टिव डिजायर. वी हैव. Secondly, we should have ability to pay. Yes, we have. Third thing is this, willingness to buy. Yes, we are willing to pay 5 lakh rupees and take the product. So 3 things to we have. But there should be other 2 things also. Then only we can say कि our demand is fulfilled. Fine. And other 2 things are, that is particular price. And the 5th thing is particular time and place. Particular time, the most important, and side by side place also. Now what these 2 means? If suppose that vendor told me the round figure was 5 lakh rupees, but along with the accessories which I have, I was liking for my car, the costing of car has reached up to 5,50,000 rupees. मतलब 5 लाख रुपए मेरे पास थे, पर जब
प्रोडक्ट को मैं लाने के लिए उसमें एक्सेसरीज को जोड़ा ताकि वो और अच्छी लगे, तो उन एक्सेसरीज के साथ उसकी प्राइस बढ़ के हो गई 5,50,000 रुपीज। सो द फाइनल पेमेंट इज 5,50,000। तो 5,50,000 अगर मैं पे कर पाई तो आई विल टेक इट। वो डिमांड बनेगी, वरना डिमांड नहीं बनेगी। हम मान के चल रहे हैं कि यस वी आर रेडी टू बाय 550 ऑल्सो, सो दैट 550 इज द एग्जैक्ट प्राइस विच वी आर पेइंग फॉर दैट प्रोडक्ट। फाइन, एंड एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। टाइम एंड प्लेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वाई? चलो पहले इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 5,50,000 रुपीज हमारा फिक्स हो गया और हमें जाके 5,50,000 का पेमेंट कल करना है और अपनी कार को घर लेके आना है। पर हुआ क्या, इसी टाइम बीच में सम एक्सेसरीज की अमाउंट बढ़ गई। एक ही दिन में द प्राइस ऑफ सम एक्सेसरीज हैज गॉन अप and the vendor said that now the price of the car is going to be 5,60,000 rupees। तो हमारा यहाँ पे मेन चीज क्या है, हमारी डिमांड तब पूरी होगी जब हम एक पर्टिकुलर प्राइस पे और उस पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पे जाके उसे बाय कर लेंगे। जब तक हम उसे बाय नहीं करते उसकी प्राइस वेरी कर सकती है और हमारी डिमांड या हमारी जो विलिंगनेस है उस प्रोडक्ट को खरीदने की वो कम या ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो अब 5,50,000 रुपीज की कार है, प्राइस भी पता चल गया और हम एक टाइम पे जाके हमने उसे पेमेंट कर दी, तो क्या होगा, प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा एंड वी विल कम बैक टू आवर प्लेस विद दैट न्यू प्रोडक्ट। और अल्टीमेटली हुआ क्या, आवर डिमांड इज फुलफिल्ड। सो दिस इज डिमांड। नाउ सी, सो डिमांड पता चल गया। डिमांड इज समथिंग, rather let us see go to the definition in simple terms। अगर हम कहें, so demand is an effective desire। demand is refers to an effective desire which is backed means followed by ability and willingness to pay at a particular price and at a given period of time। So by these 5 points the simple definition of demand is framed out। Fine, so I hope you have understood the concept of demand कि demand कब पूरी होती है, जब हमारे अंदर desire हो, willingness हो, amount हो और हम उस amount को पे करके चीज को घर ले आते हैं, तब हम कहते हैं कि हमारी demand पूरी हो गई। हमें इस चीज की जरूरत है तो वो जरूरत है, वो पूरी घर नहीं आई है अभी तक। दिस इज द केस ऑफ वॉन्ट। और डिजायर तो कुछ भी हो सकता है, अभी हम सिर्फ सोच ही रहे हैं। सो इन तीनों को हम डे टू डे लाइफ में इन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बट वी डू नॉट डिफ्रेंशिएट देम, वी यूज इट कैजुअली। और एक ही सेंस में हम इसका यूज करते हैं कि आई वॉज डिजायरिंग फॉर अ ड्रेस, तो उसका मतलब होता है कि हमें ड्रेस लाके मार्केट से लेके आना है। But actually these 3 words have different meaning। I hope you have understood the meaning of the 3 terms, and by the use of these 3 terms we have come to the exact point that what actually the demand is। Fine, so ultimately again I am telling you in simple terms, demand refers to an effective desire backed by ability and willingness to pay at a particular price and at a particular time, given period of time। I hope you have understood the simple definition of demand। But for the concept which we have to do, we have to understand one more concept which is very important for demand, and the actual definition we have to learn it for our content which we have to do in the further classes। Now this definition which I have written here is very important, and this definition we are going to use it to frame other definitions also। There are various definitions coming up in this chapter and we are going to frame out। हम सीखेंगे कि कैसे लिखें डेफिनेशन को, और जो बेसिक रहेगा वो यही रहेगा डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन में क्या है, ये तो थे सारे फैक्टर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, डिमांड के लिए। पर इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है प्राइस। क्या है, प्राइस। प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है। और प्राइस
प्राइस का डिमांड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है, मीन्स डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. We can write it like this. Price is inversely related to demand. This is inverse. This is the relationship sign. और जब inverse लिखते हैं तो 1/d लिखेंगे. तो क्या हो गया? जब प्राइस बढ़ता है, inverse relation मतलब उल्टा. अगर प्राइस बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए we are using the arrow upwards. And प्राइस के डाउन होने के लिए we are using the arrow downwards. जो चीज बढ़ेगी उसके लिए arrow up, जिसके लिए कोई चीज की वैल्यू घटेगी तो एरो डाउन. सो प्राइस जब बढ़ता है देन डिमांड फॉर अ कमोडिटी रिड्यूसेस, एंड व्हेन प्राइस डिक्रीजेस फॉर अ प्रोडक्ट, डिमांड फॉर दैट प्रोडक्ट इंक्रीजेस. इसका क्या मतलब हुआ? इसी चीज को वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड इन द नेक्स्ट क्लास. फॉर द टाइमिंग आई विल टेल यू दैट. Take an example. If I say someone has asked you to go to your mother has asked you to go to the market and buy 1 kg of potato. 1 kg of potato. So you went to that vendor. Person के पास गए. Person ने कहा कि 1 kg of potato will be of ₹20. 1 kg is quantity demanded and price is ₹20. ठीक है. दैट वेंडर टोल्ड कि अगर आपको खरीदना है तो 5 kgs ही विल यू कैन पे ₹80. 1 kg 20 रुपीज, 5 kgs कितने के हुए? ₹100 के. पर वेंडर सेड कि आई विल गिव यू एट ₹80 इफ यू वांट. तो व्हाट यू विल डू? यू विल परचेज इट. यू आर गेटिंग ₹20 लेस. You have to pay ₹20 less, so that you will buy 5 kgs of potatoes will at ₹20. मीन्स आप 1 किलो आलू खरीदने गए थे, आपने 5 किलो आलू खरीद लिए. तो क्या हुआ? आपने क्यों खरीदे? क्योंकि उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई. तो प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है. सेकेंडली, अब क्या हुआ? उल्टा लो. आप गए ₹20 का खरीद सोचकर कि 1 kg पोटैटो आपका आ जाएगा ₹20 में. जब आप गए तो वेंडर टोल्ड यू दैट इट इज ऑफ ₹25. तो आप क्या करोगे? आप 1 kg ही खरीद के लाओगे, आप ज्यादा नहीं खरीदोगे, या कहोगे चलो ½ kgs दे दो, आप ₹20 का कर दो. अगर आप ₹20 लेके गए होंगे तो यू कांट पे ₹25. देन व्हाट यू विल से कि ₹20 का दे दो. तो what will happen? The quantity will reduce from 1 kg. वो आपको 800 और 850 ग्राम्स दे देगा. So हुआ क्या? प्राइस जब बढ़ गई प्रोडक्ट की तो डिमांड विल रिड्यूस. So this is the automatic relationship with price and demand. तो इन प्राइस और डिमांड की बेसिस पे there is a definition which we have to learn it for the concept and the further study of demand. So here the two concepts which are very important for this is quantities. I have used the word quantities. This quantity word is important, that represents demand, and the second is the price. With the use of these two factors, the definition is framed out. And in the definition, abhi I will study it, I will explain you. I will tell you what I have done is, in starting I have used the word quantities, and at the ending part of the definition I have used the word price. तो quantity पहले आएगी, price word बाद में आएगा, बीच में हम बात करेंगे कंज्यूमर की. तो ये 3 concepts अगर आप ध्यान में रखते हो तो you will be able to frame a sentence for a definition of demand. So let us see how this definition is framed out. Demand refers to all. आप मार्केट जाते हो, सारी commodities मिलती है ना, तो we will write all quantities of a commodity. एक चीज खरीदने जाते हो, उसकी कितनी क्वांटिटी आप खरीदते हो. Which a consumer, जो एक consumer, one consumer is willing to buy, जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है at a particular price of a commodity. At a particular price of a commodity. So demand क्या होता है? Demand होता है
all quantities of a commodity which a consumer is willing to buy at a particular price of a commodity. That is called demand. So, this is the definition. Remember this method to write the definition, and we are going to frame out other definitions using this criteria. So, I hope you have understood. Learn this definition. This definition is very important for the further concept of demand. So, this was all about basic concept of demand, and now we are going to move on to kinds of demand, types of demand and law of demand in the next class. So, I hope you have understood this concept. Thank you.